अक्टूबर नवंबर 2017, ठीक है, पेपर 1-2। मैंने पहले भी आप बच्चों को ये बताया था कि ये आपका जो पेपर का आपको कैसे पता चलता है ये कौन सा पेपर है, और इसमें आपको थोड़ी सी निशानी बताई थी। ये जो है ना पहले वाला, ये आपको पेपर शो करता है, यानी ये पेपर 1 है, ठीक है, ये पहले वाला 1, और दूसरे वाला 2 उसका वेरिएंट शो कर रहा है। डिफरेंट जो कंट्रीज है ना उनमें डिफरेंट ये वेरिएंट के पेपर आते हैं। कुछ में यहाँ पे 1-3 लिखा होगा, कुछ में 1-1 लिखा होता है, 1-2, तो 3 वेरिएंट बेटा, 1-1, 1-2 और 1-3 आपका ये चल रहा है। देखो ये पेपर 1 ही है सबका, लेकिन आगे वेरिएंट, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है, ओके। और ये जी इसका टाइम है 1 hour 45 minutes होता है, और आप आराम से ये पेपर 1 घंटे में कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं पेपर, इसलिए इसमें कोई भागने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप ओवरलुक नहीं करेंगे और जल्दी से भागेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, बस एक मरतबा और ये बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं है। एक तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, एक ये कि इसमें बिल्कुल कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है दोनों पेपर्स में, 1 और 2 दोनों में, ठीक है। और इसके अलावा कोई एडिशनल मटेरियल नहीं मिलता, आप इसी के ऊपर ही वो देते हो, आंसर देते हो। इसके अलावा कहता है जी कि आप ये स्टेपल वगैरह, पेपर क्लिप्स और ग्लो या करेक्शन फ्लूइड वगैरह ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दीज थिंग्स, ठीक है। और डू नॉट राइट इन द बारकोड, ये जो लिखे हुए हैं, ये नहीं कि आराम से फारिग बैठे हुए इसके ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। और इस पेपर के टोटल मार्क्स होते हैं 75, ठीक हो गया जी। दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी मैं दोबारा बता दिए अगर कोई बच्चे जिसने वो पहले वाला मिस कर दिया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द बाइनरी। तो इसमें वो पूछ रहा है जी अ रोबोट आर्म इज in a factory is programmed to move products. The binary instructions to operate the robot arm are, ये कुछ उसने ऑपरेशन दे दिए, ठीक है। और इसमें आप लोगों को बता दिया जी कि ये इंस्ट्रक्शन अप को शो कर रही है, ये डाउन को, ये लेफ्ट राइट, और सारी इंस्ट्रक्शंस उसने दे दी हैं, ठीक है, राइट। अब वो आपसे क्या कहता है, कहता है जी the instructions are entered as hexadecimal values and operator enters the value 91C3F. Convert the values and write down the operation. For example, वो write operation है या कौन सा operation, ठीक है। अब इनको आपने करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके। तो अब आप 9 को कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। क्या बनेगा, ऊपर आप पता है ना, आप लिखते थे 1-2, जब आप हेक्सा से बाइनरी में करते हैं तो 1-2-4-8 तक आप ऊपर लिखते हैं, हमने 9 बनाना है, बिल्कुल ठीक है, 1001, जी जी 1001, ठीक है, ठीक है। और दूसरा 0001, और तीसरा क्या जरा करके मुझे दिखाएं जल्दी से मुझे करके दिखाएं, शाबाश। तो अच्छा 1100। हाँ, सी जो है ना, देखो हेक्साडेसिमल में बताया हुआ है कि आप जब भी हेक्सा हो तो आप आराम से ए से एफ तक आपने लिख लेना है, ABCDEF, जब भी हेक्साडेसिमल की बात करें, और साथ उसकी टेनरी वैल्यू लिख लेनी है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इन दिस केस जो सी है वो 12 है, तो 12 को बेसिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बनेगा 1100, क्योंकि 8 और 4 को ऐड करने से ही 12 बनता है, ठीक है, उनके नीचे हम 1 लिखते हैं, बाकी जीरोस होते हैं। और जो 3 है वो क्या बनेगा, 0011, और F क्या होता है जी, ये देखें, 15, 11, हाँ, 8 और 4 12, 14 एंड 1 15, ठीक है जी, बिल्कुल सही है।
ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे सारी की सारी, और अब आप ऑपरेशन इसके ऊपर लिस्ट में से देख लेंगे कि क्या ऑपरेशन बनता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ये। तो अब आप देखो कि 1001 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखें। ठीक है, इसमें पहला हमने लिस्ट में उसकी देखा तो वो इससे मैच कर रहा था, तो वो है लेफ्ट। ठीक है, बात समझ आई। और दूसरे वाला है 0001, वो देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन। यहाँ पे आप लिख देंगे डाउन। आगे क्या लिखो जी, बताइए, सी के आगे। Sir, close. हाँ, सी बनता है 1100, ओपन हो गया जी। ठीक है, और 3 क्या बनेगा, 0011 क्लोज। हाँ जी, और लास्ट आखिरी वाला up. क्या, हाँ Up. ओके ठीक है जी। तो लास्ट वाला जो एफ है वो सारे वंस जो है वो अप है। तो ये जनाब आपने पहले हेक्सा को बाइनरी में किया और फिर आपने उसको मैच किया ऊपर लिस्ट के साथ और करेक्ट ऑपरेशन आपने लिख दिया। ठीक है जी, ये मैं साथ इसको अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि चले लेटर ऑन आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अब आप लोगों ने इसके आंसर देने हैं। वो है storage devices and storage media can be categorized as primary, secondary or offline. Write primary, secondary or offline next to each storage. आपने बताना है जी के whether the hard disk is a primary, secondary or offline in the same time. You will tell about RAM, ROM, CD-ROM, SSD, DVD, RAM. जी बच्चों, what do you think? सर RAM और ROM प्राइमरी बन रहा RAM और है। RAM और ROM प्राइमरी है। रैम और रोम प्राइमरी है, और इसके अलावा रैम और रोम और प्राइमरी हार्ड ठीक। डिस्क और SSD सेकेंडरी में। अच्छा जी, हम एक ऑर्डर से अगर चलते हैं तो बेहतर है। सबसे पहला हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये क्या होगी, सेकेंडरी। सेकेंडरी। मैं पूरा नहीं लिख रहा ये, अब आप ने इसको सेकेंडरी समझना है। रैम जो होती है वो क्या है, प्राइमरी। ठीक है, पूरा वर्ड आपने लिखना है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। और सीडी रोम सर ऑफलाइन। ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन, आपने पूरा लिखना है ऑफलाइन। और एसएसडी सेकेंडरी। सेकेंडरी, बिल्कुल ठीक है। और डीवीडी रैम, ऑफलाइन। गुड, बेहतरीन है जी, ऑफलाइन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑफलाइन वो होती है कि वेयर यू सेव द डेटा एंड यू कैन पुट दैट डिवाइस अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। सेकेंडरी वो होती है जो साथ साथ यूज हो रही होती है, इट कैन स्टोर परमानेंटली, ठीक है ना, डेटा, बट प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इट। और रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर प्रोसेसर नीड्स अ डायरेक्ट एक्सेस टू अ सर्टेन टाइप ऑफ मेमोरी, वो होगी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, explain the difference between the binary number system and the Dendrite number system. क्या है जी, सो देखें, बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ बेस 2 नंबर सिस्टम, इसको लिखेंगे। ठीक है, बाइनरी इज बेस 2, binary is base 2 number system, while the Dendrite number system is base 10. ये बताया था, binary is used by the computer system, ठीक है, and it is in the form of zeros and ones only. और जो Dendrite number system होता है, that chooses the value 0 to 9, and it is mostly used in our common life, everyday life, to measure weight, height, ठीक है, temperature, everything that is measured in Dendrite, ठीक है, but binary is used by the computer systems. ठीक है जी, ओके।
Let me erase it and move to the next question. Explain the process of converting the binary number 1010 into a Dendrite number. ठीक है ना? अभी कहता है कि what is its process? Explain भी करना है. ठीक है? So you will have to read the question carefully. कि it is not कि okay, convert this number into Dendrite. ठीक है? It says explain. कि how would you convert it into the Dendrite number system? तो आपने उस process को बताना भी है. So you will explain in a way कि जैसे किसी बंदे को नहीं पता और आप उसको समझा रहे हैं. ठीक है? So first of all, you just write that binary number system. ठीक है? And each place has a certain value, a place value. ठीक है ना? For example, the first place has the place value 1, the second has the place value 2. That means multiples of 2. Third place has a place value 4. Okay? Every number is being multiplied by 2 and you get the next one, 8. Okay? If that was a longer number, suppose there was 1 at 5th place, so its place value will be 16. So place value is always multiple of 2. Starting from 1. ठीक है, 1 से शुरू होता है and then you keep on multiplying it by 2, you get the next place value. ठीक है, okay. Since we have only, you know, these 4 bits. ठीक है, then what is the next step? So now you will identify the column heading, the place value heading where you see 1 under it. So only you add those place values. Okay, so you will neglect these place values. So I've selected only 2 because there is 1 under them. So 8 and 2 will be added in this case and you will get 10. So this is the answer. ठीक है, तो इस तरह इस सबको हमने वर्ड्स में डालना है सबको. वर्ड्स में भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि each place has a place value. For example, the first place has the place value 1, second has 2, third has 4, and fourth has 8. So you will now add up the place values where there is a 1 under them. साथ आप एग्जांपल में बताएंगे 8 plus 2. ऐसे साथ करके भी दे रहे हैं. And in the same way you are writing it in words as well. ठीक है? Okay जी. Moving to the next question जी. Now it says a file server is used as a central data store for a network of computers. Rory, someone, जो भी है, Ronier, sends data from his computer to a file server. यानी अपने कंप्यूटर से फाइल सर्वर की तरफ डेटा सेंड कर रहा है, which is approximately 100 meters away. थोड़ा सा distance है. It is important that the data is transmitted accurately. Okay, so you will have to underline. First thing is the distance, and second is concern is the accuracy. Rory needs to be able to read data from and write data to the file server at the same time. Yani he is sending the data and receiving the data at the same time. So all the requirements have been set. Now you are asked in part A to identify the most suitable data transmission methods for its application. आप क्या समझते हैं? देखो, अभी उसने कहा था कि accuracy, so serial is more accurate. ठीक है ना? ज़्यादा reliable. At same time के लिए duplex suitable होगा. So the method 2 is duplex. Explain why your answer to part A is the most suitable. क्यों है suitable? So you'll have to explain it. How you are going to explain it? इस पे ये बताएंगे कि serial data transmission is more reliable. So you can write it. Bit by bit. ठीक है? Bit by bit. हाँ, it is reliable. So data won't get skewed. Mix नहीं होता, skewed नहीं होता data. ठीक है ना? तो इसके अलावा secondly, why you have selected the duplex? Because the data transmits in both directions at the same time as it was asked in the question. ठीक है? Since the data is being transmitted in both directions, that's why we have chosen duplex data transmission.
because in simplex or half duplex, data cannot be sent at the same time, sent and received at the same time. Bas, this is the proper answer. Moving to the next question now, Ji, and that is identify and describe two methods of error checking that can be used to make sure that the data stored after transmission is accurate. कोई से भी दो methods हैं. We have also discussed in the previous paper of May June 17. उसमें भी you were asked to enter or describe the error checking methods. So you can select anyone like checksum. तो चेक सम में हमने क्या लर्न किया था कि अब वैल्यू इज कैलकुलेटेड, मैं भी लिख नहीं सकता, यू कैन राइट माय वर्ड्स अगर आप चाहते हैं तो. अब वैल्यू इज कैलकुलेटेड एंड दैट वैल्यू इज ट्रांसमिटेड विद द डेटा, ठीक है ना, एंड देन दैट वैल्यू इज रीकैलकुलेटेड आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है ना, बाय द रिसीवर. तो फिर क्या होता है, इफ both the values, one which was sent by the sender and one which was calculated by the receiver match, that means the data was accurate. ठीक है, बस ये first method में that's enough. And in second method you can use parity check. You have the option of automatic repeat request, echo check. आपके पास open option है. आप second method, for example, in case if you select the parity check, you can say जी parity bit is transmitted with each byte. आप ये पहले मेंशन करेंगे कि आप parity bit is transmitted with each byte, हर byte के साथ जाती है. So it can be either even or odd. Okay, if it is even, then it makes sure that the number of ones should be even. ठीक है, और after the data transmission, the receiving computer use the same type of parity. Okay, if the sender use even parity, the receiver will also use even parity. Okay, and the receiver will also count the number of ones, and those number of ones should be even. Okay, only then the byte was correctly transmitted. Okay, Ji. Moving to the next question, Ji. इसमें कहता है Raj is using the internet to do some online shopping. He visits a website that tells him that it uses cookies. Explain what is meant by the cookies. Cookies में I've already told you basically cookies क्या होती हैं कि वो it's a data, it's a file that is stored as a text file, ठीक है ना, in user's computer by that website which the user has visited. आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं ना, that stores a cookie, a file in your computer, ठीक है. अब वो क्या करता है, यूजर के कंप्यूटर के ऊपर आ गया है. स्टोर कौन कर रहा है, स्टोर्ड बाय द ब्राउजर. ब्राउजर यूज कर रहे हैं ना टू गेट एक्सेस टू द इंटरनेट. सो ब्राउजर is stores the file in the user's computer and that file was sent by the website या web server, ठीक है. So that website can detect the person या user whenever that person visit that website again, ठीक है. Okay, आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट पार्ट बी में गिव टू एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ कुकीज. कहाँ का यूज होती है, आप देखो साथ यूज उसने पूछ लिया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल टू स्टोर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा, योर लॉगिन डिटेल. It can also save the items you can say which you have purchased online, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग बास्केट जो होती है. और इसके अलावा इट कैन आल्सो सेव योर इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, ठीक है, ये भी उसने सेव कर लिया आपका. तो वो सो दैट सर्फिंग हैबिट कैन बी यूज्ड टू टारगेट द कस्टमर फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. इट कैन आल्सो स्टोर द पेमेंट डिटेल्स एज वेल. तो ये आप यू कैन ओनली राइट 2 पॉइंट्स फ्रॉम दैट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट में कहता है जी कि Selma writes the following 4 answers in the computer science examination. State which computer term she is describing. अब उसने ये लिखा है, it is a signal which when the signal is received, it tells the operating system that an event has occurred.
Selva is describing what? Interrupt. ठीक है? So basically interrupt है वो it tells the operating system कि okay this something has gone wrong. ठीक है ना? For example, printer is out of paper. वो message आएगा into your computer कि okay जी printer is out of paper. That is an example of interrupt. So this signal is basically interrupt. Second, it takes source code written in a high-level language and translates it into machine code. It translates the whole of the source code at once. एक ही बार सारे को convert करता है. तो Selva is describing what? वो translators दो पढ़े थे हमने high level के. One was compiler, the other was interpreter. So what is the correct answer? Compiler. Okay जी, so compiler converts the whole source code in one go. ठीक है ना? Third में उसने लिखा था the part of the central processing unit CPU that carries out calculation. Which part carries out calculation? It is ALU, arithmetic logic unit. ठीक है? Next है जी, when data is transmitted, if an error is detected in the data received, a signal is sent to ask for data to be retransmitted. This continues until the data received is correct. जी, ये कौन सा मेथड है? वो बार बार आपको वो कहता है. This was ARQ, automatic repeat request. ठीक है? सर वो टाइम आउट वाला जो था. जी 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 एग्जैक्टली. ठीक. ये आप लोग कर सकते हैं इजीली. ठीक है, इसमें कोई वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जल्दी से आप लोग बना सकते हो. दिस इज ए नॉट एंड बी, सो यू कैन राइट ए नॉट एंड बी. So first part is complete and it has another AND. So you will write another AND, and with that AND you will link this bracket A naught and C naught. So A naught is already there and C naught. They have been connected. ठीक है जी. Yeah, first two brackets have been completed and now the third bracket starts with OR. Place OR here. This is the OR gate. I should make more accurate. So next the B is 1 and C. That means B and C. So you can take the link from J ho gaya B, and now I will have to take it from back of NOT gate because it was B and C simply. Okay ji, that's it. This is the correct logic circuit. And move to the next one. Acha ji, next is the basically it's a computer has 2048 MB of RAM. How many GB of RAM does the computer have? GB के लिए आप क्या करेंगे? Simply you will divide it with 1024. तो क्या बन जाएगा? What do you think? So every time. So one. देखिए, every time when you move to the higher units, since the GB is higher unit than MB, so you divide it by 1024. ठीक है? ये exactly 2 पे divide हो जाता है, so answer is 2 GB only. यहाँ पे आप लिखेंगे. This is the proper place to write answer. ठीक है ना? 2 GB. Okay जी.